Well, now we'll try to explain these observation on the basis of wave theory. Wave theory के basis पे हम लोग ये observation explain करने का कोशिश करेंगे. First, photoelectric emission takes place only if the frequency of incident light ray is greater than a particular frequency called the threshold frequency. Threshold frequency से ज़्यादा होगा तभी photoelectricity possible है, otherwise possible नहीं है. लेकिन according to the wave theory ऐसा नहीं होना चाहिए. Why? Because wave theory says that light brings energy. So when the light falls, you allow it to fall for a certain amount of time, it can produce enough energy to heat up the metal surface or energize up the electrons on the metal surface to create the photoelectric effect. उसके लिए क्या नहीं चाहिए? कोई certain frequency का light होना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए. Why? Because wave is a continuous phenomena. वो कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करता रहेगा, करते जब इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगा तब वो डायरेक्टली एमिट हो जाएगा. सो ऐसा कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी नहीं होना चाहिए. सो वेव थ्योरी ये ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है. ठीक है. अब वेव थ्योरी बोल रहा है कि अगर एक मेटल सरफेस है, यू अलाउ द लाइट टू फॉल ऑन द मेटल सरफेस, बट इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम. क्यों चाहिए? Because the light which is falling on the metal surface is getting distributed equally on the whole metal surface. पूरा metal surface equally distribute हो रहा है. वो metal surface एक इलेक्ट्रॉन होता है. Thousands of the order of 10 to the power 23. 10 to the power 23. Avogadro number? तो उसका order में रहता है, right? 10 to the power 23 का order में रहता है, मतलब huge number of electrons are present. These continuous waves will energize all the electrons which are present on the metal surface, and then these electrons will get emitted. So that will require a huge amount of time. A rough calculation shows it would require more than 1.5 years or 2 years time for the light to produce photoelectron from its surface. लेकिन observation क्या बता रहा है? Instantaneous process means that photoelectron starts instantaneously. So wave theory इसे भी explain नहीं कर पाता. Now the next one. ये observation क्या बता रहा है कि stopping potential does not depend upon the intensity of light. But see, what is stopping potential? पहले वो डिस्कस करते हैं. हम लोगों ने डिस्कस किया कि when we make the cathode positive and the anode negative, then the photoelectrons gets repelled by the anode और वो पहुंच नहीं पाता है. जितना पोटेंशियल में वो पहुंच नहीं पाता है, we call it stopping potential. अब स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी के ऊपर. जितना ज्यादा एनर्जी होगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल को ओवरकम करके वहां पहुंच पाएगा. अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होने से भी वो रुक जाएगा. हाँ या ना? अब वेव थ्योरी क्या बोल रहा है? इंटेंसिटी इज नथिंग बट डिपेंडेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द वेव. तो अगर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते रहेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को इतना एनर्जी मिल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी विल बी वेरी स्ट्रांग एंड इट विल ओवरकम द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड हिट द मेटल सरफेस. मतलब ऐसा कोई बैरियर नहीं होना चाहिए कि इतना इंटेंसिटी में वो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा कोई बैरियर नहीं होना चाहिए कि इतना फ्रीक्वेंसी होने से ही वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हिट कर पाएगा, अदरवाइज हिट नहीं कर पाएगा. ऐसा कोई बैरियर नहीं होना चाहिए. So neither it can explain this one nor it can explain the next one. दोनों में से, चारों में से कोई भी ऑब्जर्वेशन वेव थ्योरी सपोर्ट. क्यों? क्योंकि वेव थ्योरी बोल रहा है कि वो कंटिन्यूअस फिनोमेना है. द लाइट वेव का जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस फिनोमेना है, इसलिए कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा. So Einstein came up with the answer to all these questions and he brought the concept of photons. So what are photons? This light energy, we explained, that does not come as a continuous phenomenon. It is a discrete phenomenon. It comes in some small packets. Obviously they are waves, but they are not continuous waves, but they are wave trains. हम लोग डिस्कस किए थे wave trains, याद है? नहीं, wave trains कभी डिस्कस नहीं किया. अच्छा, wave trains क्या होता है कि जो लाइट वेव्स हम लोग देखते हैं ना, वो लाइट वेव कंटिन्यूअस नहीं होता है.
तो तुम लोग बोलोगे सर कैंडल ऑन करते हैं, थोड़ी ना कैंडल ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन होता है, तो कंटिन्यूअस ही हुआ ना। हाँ, बहुत जल्दी होता है। मतलब यू नो हाउ इज दिस लाइट प्रोड्यूस्ड इन अ कैंडल? कैंडल में लाइट प्रोड्यूस कैसे होता है? डिस्कस किए थे कि एटम्स जो है, एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल में एनर्जाइज हो जाता है, फिर वो जब लोअर ऑर्बिट्स में लौट के आता है तब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है एंड दैट एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। नाउ एक एटम का जब एक इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देके तो बंद कर देगा ना, सो दैट क्रिएट्स अ पैकेट। वो एक वेव ट्रेन जो क्रिएट करता है, दैट वेव ट्रेन इज अ पैकेट। Then the next atom creates another packet, the next atom creates another packet. So these packets are called photons, and this photons has got some properties. वो properties अगर हम लोग पहले समझ लेंगे तो हम लोग ये सारा जो observation है ये हम लोग explain कर पाएंगे, we'll be able to explain the observations. Okay, so now write this down, write this down one by one fast. First write this down. According to wave theory, अच्छा, give the heading explanation on the basis of wave theory. Explanation on the basis of wave theory. Explanation on the basis of wave theory. Of wave theory. Wave theory. Wave theory. Yes, sir. Write down the first point. According to wave theory. According to wave theory. Light should take a lot of time for the photoelectric emission to take place. Light should take a lot of time for the photoelectric emission to take place. Full stop. This is because the energy which is incident, this is because the energy which is incident falls on all the electrons, falls on all the electrons, hence the energy is distributed uniformly, on all the surface electrons, all the surface electrons. ठीक है? Next point. Since wave theory says that light is a continuous source of energy, since wave theory says that light is a continuous source of energy, hence frequency of any radiation can produce photoelectrons if sufficient time is allowed. But this does not explain the concept of threshold frequency. But this does not explain the concept of threshold frequency. ठीक है? Third point.
third point, as the intensity, as the name, according to wave theory, intensity of light is proportional to the energy carried by it. Proportional to the energy carried by it. Carried by it. Hence, there should not be any concept of stopping potential being independent of intensity. There should not be any concept of stopping potential being independent of intensity. Stopping potential being independent of intensity means हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन में देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए लाइट वेव थ्योरी के हिसाब से. ओके, राइट दिस डाउन. Hence, wave theory could not explain. एक नया पैरा बना के लिखना थोड़ा. Hence, wave theory could not explain photoelectric effect. This calls for a new theory. That is photon theory of light.